Okay, now let's do this example on Banach space. So we are given that L is a non-zero norm linear space and S is a set of all elements of N whose norm is less than or equal to 1. And this S is a subspace of this norm linear space, which is N. Now we have to show that N is a Banach space if and only if S is complete. Now let's do first part. We assume that N is a Banach space. Then we'll show that S is complete. Now for this, we need to prove that every Cauchy sequence in S converges in S. तो वही स्पेस कंप्लीट होगा जब उसमें Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज करे. नॉर्म लीनियर स्पेस में सारे Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करते, बट जिन स्पेसेस में Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं उन्हें हम बना के स्पेस बोलते हैं. तो हमने Cauchy सीक्वेंस ले लिया एक्शन. अभी हमने एस में लिया तो एस की डेफिनेशन है कि एस में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब की नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 है. तो इस Cauchy सीक्वेंस के सब एलिमेंट्स की नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 होगी फॉर एवरी एन. अब हमें गिवन है एस इज ए सबसेट ऑफ एन and action is a Cauchy sequence in n. Now this n is complete. Now since n is complete, so this action is a Cauchy sequence in n. Now this will converge in n. तो हमें एक एलिमेंट x ऐसा मिलेगा n में such that this action will converge to x. Now we'll show that this x which is in n belongs to s also. And how do this element belongs to s? If we prove that norm of x is less than equal to 1. Now action converges to x, so norm of action will converge to x because norm is a continuous function. A norm of x equals to, there's a limit of norm action n tends to infinity. Now this action is less than equal to 1 for every n, so therefore this limit will be less than equal to 1. So we have shown that norm of x is less than equal to 1, and therefore this x belongs to s. Now let's come to the second part. Now we assume that S is complete, means every Cauchy sequence in S converges. Now we saw that N is also a Banach space. Now N is going to be non-linear space, so we'll show that N is complete. For this, we'll take a Cauchy sequence in N and prove that this Cauchy sequence converges N. So we take a Cauchy sequence Yn in S. Then by definition of this Cauchy sequence, this Ym minus Yn would tend to 0. As m tends to infinity. We can also say that norm of ym minus yn is less than epsilon for every mn greater than or equal to p. Now we define xn to be yn upon norm of yn, right? For every n. Now why are we taking this xn equals to yn upon norm yn? इसकी norm अगर हम लेंगे तो 1 आएगी. तो कोई भी एलिमेंट जिसकी norm 1 आया 1 से कम आए वो इसको बिलोंग करेगा. हमें प्रूव करेंगे कि ये xn Cauchy सीक्वेंस है S में. तो Cauchy सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस एक्शन है तो लेस देन एप्सिलॉन दिखाएंगे एट टेंड्स टू 0. तो नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस एक्शन लिया, एक्सएम और एक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ से इसमें पुट कर दी. अब हमने yn अपॉन नॉर्म ऑफ ym ये सबसे कर दिया, वही ऐड कर दिया, तो हमने vn ऐड इन सबसे सेम टर्म. ओके, now norm of x plus y is less than equal to norm of x plus norm of y. तो हमने वो डेफिनेशन इस पे लगा दी. इस नॉर्म ऑफ yn को हमने यहाँ कॉमन लिया, ym माइनस yn. फिर हमने यहाँ पे इस yn को कॉमन ले लिया, तो 1 upon norm ym माइनस 1 upon norm yn. Now norm of alpha x equals to mod of alpha norm of x, वो हमने यहाँ लगाया. Now this is your alpha, it comes out of the norm. So 1 over norm ym, this remains same, and now this is alpha, so it comes out to be norm, so it becomes mod of alpha. यहाँ पर mod नहीं बना क्योंकि norm पे mod नहीं लगाते, it's already non-negative. So 1 upon norm ym, norm of ym minus yn, ये हमने LCM लिया, तो norm of yn minus ym बना, norm of yn. अब ये हमने yn से norm yn से yn कैंसिल कर दिया. Now this would be less than equal to, तो हमने प्रूव कर दिया कि this जो हमने पहले लिख के आ रहे थे, this so less than equal to norm y minus yn, norm ym plus norm of yn.
minus ym upon norm of yn. ये दोनों ऐड हो गया. Now this ym, the sequence is a quotient sequence, therefore it tends to 0 as m tends to infinity. ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिख लिया. तो अब हमने प्रूव कर दिया कि this action is a quotient sequence in S and S is complete. So therefore there exists some element in S. इसका नाम हमने x रखा. ये xn इस x पर कन्वर्ज करेगा. तो xn की डेफिनेशन क्या थी? yn upon norm of yn. So it converges to x. So therefore mod of norm yn minus ym less than or equal to yn minus yn, this tends to 0. So therefore this norm of yn is a quotient sequence of real numbers which is in R, and R is complete. Set of real numbers is complete. यहाँ पर हर quotient sequence converge करता है. So therefore it will converge to some real number alpha. So therefore yn would converge to alpha x which is in n. Therefore n is complete. So this example is proved.